So class 7, first, because we are meeting for the first time in the new session, right? So we will do some basic concepts. Living organisms, living organisms come under, see here, listen here, leave everything. बिल्कुल इधर, ध्यान इधर, सब छोड़ दो, पेन पेंसिल कॉपी सब छोड़ दो, पड़ोसी क्या कर रहे हैं वो भी छोड़ दो, सिर्फ सामने की तरफ, ठीक है? तो साइंस हैज थ्री बेसिक ब्रांचेस: physics, chemistry, and biology. Biology deals with the living organisms. If we are studying insects, it is biology. If we are studying bacteria, it is biology. If we are studying plants, it is biology. But when we study chemical reactions, burning of wood, dissolving of sugar in water, you must have studied in class 6, right? So these respiration, you will study in, the reactions in respiration. Respiration is a biological process, but a reaction in respiration, or you can say ripening of fruit, cutting of wood, cooking of food, all these are chemical reactions. And we study chemical reactions in which branch of science? It is chemistry. But movements, we are moving here and there. Car is moving. Earth is moving around sun. Moon is moving around earth. Then why the fruits, why the things fall towards the ground due to force of gravity? What are the principles of light? How light reaches our eyes? How light acts in different mediums? All these physical phenomena, जो natural phenomena है, we study natural phenomena in case of physics, right? I basically teach biology and some parts of chemistry, right? So we will deal, biology with chemistry also. Biology chemistry से कैसे related है? Biology math से कैसे related है? Biology physics से कैसे related है? We will study all these, right? But in biology, you अभी तक आपके दिमाग में क्या है? There are two type of organisms, plants and animals, although there are many other types. But two basic type of organisms, plants and animals. How can you differentiate whether it is a plant, it is an animal? आप कहोगे कि जो एनिमल्स है वो भागते दौड़ते हैं, चलते हैं, प्लांट्स नहीं चलते. बट बेटा कुछ एनिमल्स, जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप कुछ एनिमल्स को पढ़ेंगे कि वो क्या है, वो ग्राउंड के साथ, वो सॉइल के साथ, अर्थ के साथ अटैच्ड है, वो मूव नहीं कर सकते. ऑल एनिमल्स कैन नॉट मूव. बट कुछ प्लांट्स जैसे एल्गी है ना, यू विल स्टडी इन अदर. आपने काई देखी है ना? काई देखी है आपने? पानी में तैरती हुई काई देखी है? जिसने देखी है हाथ खड़ा करो. रेज योर हैंड्स. यस, पानी में ग्रीन ग्रीन काई है. ठीक है, हैंड्स डाउन. अपनी मम्मा से पूछोगे ना कि काई हमें दिखा दो, तो वो भी दिखा देंगे. ठीक है, तो जो काई होती है दैट इज एल्गी, इट इज ए प्लांट. बट उसके जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स है दे कैन मूव. ठीक है, तो जनरली जो बड़े प्लांट्स हम देखते हैं वो नहीं मूव करते, जो बड़े एनिमल्स हम देख रहे हैं वो मूव करते हैं. बट मूवमेंट इज नॉट अ स्पेसिफिक थिंग कि ये प्लांट है या एनिमल. तो हम करेक्टर स्पेसिफिक करेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स में व्हाट आर द डिफरेंसेस, राइट? सो फर्स्ट इज द मोस्ट कॉमन डिफरेंस, you know that plants are green, they have chlorophyll, right? So plants have chlorophyll, whereas animals, no animal has chlorophyll. इधर कोई इधर उधर आए, किसी की तरफ ध्यान नहीं, सिर्फ इधर. मैम थोड़ा सा कैमरा ठीक करना प्लीज. So plants have chlorophyll, animals no chlorophyll. You have studied photosynthesis in your school, so there you see that plants take carbon dioxide. photosynthesis में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं, और हम नहीं, प्लांट, सॉरी. So plants take in carbon dioxide
and gives out oxygen. You know that, right? So, whereas animals, हम क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड we give out. Then plants are autotrophic. Autotrophic, you know that they can synthesize their own food, right? So plants are autotrophic, whereas animals, no animal can synthesize its food. Therefore, animals are heterotrophic. Autotrophic, heterotrophic, जिसको नहीं पता, they raise your hands. If you don't know autotrophic, heterotrophic, please raise hands. Okay? So everybody knows autotrophic and heterotrophic. Then plants जो है, they bear seeds and flowers, whereas animals, they do not have seeds and flowers. किसी भी एनिमल के पास seeds and flowers नहीं होते. Cells. Have you heard about cells? Any student, कैमरे को छोड़ो, आप इधर देखो स्क्रीन पे कि इलेक्ट्रिक सेल को छोड़ दो, बायोलॉजिकल सेल. Any student who has heard about cell, raise your hands. Each organism is formed of many cells. Do you know that? Yes or no? जोर से बोलो. Yes. Raise your hands if you know. हाँ हाँ, कुछ बॉयज का हाथ खड़ा होने लगा था, फिर बैठ गए. चलिए, all the organisms. If, let us say for me, for you, we have millions of cells in our body. You must have studied in class 5th. Nerve cell, muscle cell, red blood cell, white blood cell. All these are cells in our body. Likewise, plants are also formed of cells. But there are basic differences between plant cell and animal cell. I will tell you later. ठीक है? First write down the characteristics of plants and animals. जल्दी से लिख लो. फिर मैं ये भी आपको सेल के बारे में भी बताऊं. Everybody, but within 1 minute. जल्दी से लिख लो, जल्दी से. From this you will, later become clear for heterotrophic nutrition. ये basic differences पता होंगे तो काम चल जाए. Okay, again, I'm telling you, whole of this lecture is recorded and will be uploaded. Site, Keducon e-learning. YouTube पे जाएंगे, Keducon e-learning, अपने डेट की, अपने स्कूल की,
अपनी क्लास की देखना लेक्चर, यू विल गेट द फुल लेक्चर। ये एडुकॉन ई लर्निंग हमारी साइट का नाम। ऑल डन? ओके ओके ओके, डू दिस। डन बेटा, चले आगे। Yes. So I have told you that write down each organism is formed of वन सेल और मेनी सेल। कुछ यूनिसेलुलर एक सेल के बने होते हैं और कुछ बहुत सारे सेल्स। ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड ऑफ सेल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, देयर आर फ्यू। राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर, एवरीबडी देयर आर फ्यू डिफरेंसेस। टेंस के चक्कर में ज्यादा मत रहो, फटाफट। देयर आर फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन plant cell and animal cell. There are few differences between plant cell and animal cell. क्या differences है देखें हम। देखना है जरा ध्यान से। सबसे पहले है ये सेल वॉल। रिजिड मीन्स हार्ड है। देन near to cell wall is present flexible, this is flexible, elastic है, cell membrane. This is sap vacuole in the center. These are, photosynthetic kitchens, chloroplast, having chlorophyll. This is chloroplast. This is nucleus. There are many other structures, but we will do ये जो है, this is जैसे एक सीमेंट होता है ना, ये जेली है एक।
This is cytoplasm. It is cytoplasm. Some student has told. And this is plant cell. ध्यान से बनाना है. I will ask. Next is this is animal cell. This is all jelly-like cytoplasm. So now, मैम प्लीज किसी को खड़ा करना जो इजीली माइक के पास आ जाए. By seeing the two diagrams, can you tell me the differences between plant cell and animal cell? किसी को भी जो इजीली माइक के पास आ जाए वो मुझे बताए. हाँ जी, बोलो बेटा. Plants have chlorophyll. Yes. और इधर देख के और देख के. The animals do not have chlorophyll. That is all right. Second point. Ma'am, plants are at auto. Plants have auto. डिफरेंस बताना है बेटा इधर देख. पिक्चर में क्या मिसिंग. But I am telling you, but I am asking you. See these diagrams. Only. बाकी पिछला भूल जाओ. जो आपको आता है वो भूल जाओ. See these diagrams. Now based on this diagram, tell me. Ma'am, chloroplast is absent in animal cell. क्या क्या absent है? Ma'am, chloroplast. Chloroplast absent है. और क्या absent है animal cell में? Snap vacuole. Stap vacuole भी absent है. Very good. और क्या absent है? Ma'am, cell wall rigid. Very good. Cell wall, rigid cell wall. Rigid cell wall का क्या मतलब है? सखत. Rigid. Rigid, you know, this is rigid. This is rigid. But for example, hands. कईयों के hands बहुत soft होते हैं जो compress हम कर सकते हैं. आपने 6th क्लास में पढ़ा है. Rigid means hard. ठीक है? Very good. बैठो बेटा. तो plant cells have cell wall, vacuole and chloroplast. Animal cells do not have. ठीक है, ये हमने अपने डिफरेंस लिखा है ना बेटा. ये डायग्राम जरूर बना लो एक बेसिक सा. जल्दी से जल्दी से. और यहाँ पे लिखो एनिमल सेल्स लैक. पहले भी लिखा है आपने, दोबारा से लिखे. सेल वॉल, stap vacuole and chloro. ये किसी भी एनिमल में नहीं होगा. राइट डाउन, राइट डाउन. जन बेटा चले आगे. चलिए अब मुझे आप बताना.
organism A has cell wall, has seeds and fruits, but no chlorophyll, no photosynthesis. Is it a plant? Why or why not? जल्दी से लिखते चलो और मुझे बताना है आपको. Organism X has root, stem, but root, stem and leaves. No seeds and flowers. Autotrophic. Is it a plant? Explain why. जल्दी से बताना. यस मैम, प्लीज किसी स्टूडेंट को भेजो. हाँ जी बेटा. एनी स्टूडेंट फ्रॉम. मैम किसी स्टूडेंट को भेजो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए. आओ बेटा. यस Ma'am, it is not a plant. इट इज नॉट ए प्लांट. Ma'am, yes. ये प्लांट क्यों नहीं है? Ma'am, because it has no chlorophyll and no photosynthesis. देखो ध्यान से मेरी बात सुनो. आपने डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स लिखे? जो मैंने लिखवाया Ma'am, yes. लिखा है, ठीक है. एंड रिमेंबर दैट अगर इसमें से एक भी कैरेक्टर किसी में प्रेजेंट है तो इट इज ए प्लांट. तो इसमें बताओ सेल वॉल. ध्यान से अपने को डिफरेंसेस देखे. सेल वॉल प्लांट लाइक कैरेक्टर है कि एनिमल लाइक है? Ma'am, plant. प्लांट लाइक है. सीड्स एंड फ्रूट्स प्लांट्स में होते हैं कि एनिमल्स में होते हैं? Ma'am, plant. होते हैं. तो अगर एक भी चीज, एक भी करेक्टर प्लांट लाइक है तो वो एक प्लांट है. तो टेल मी, इज इट ए प्लांट और एन एनिमल? Ma'am, plant. प्लांट है. दिस इज, ये जो आपने आंसर बताया ये नहीं. ऑर्गेनिज्म ए इज ए प्लांट. व्हाई? बिकॉज it has cell wall, it bears seeds and fruits. Is it okay? ठीक है. Ma'am, yes. रखो, बैठो. और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए. इफ एनी वन करेक्टर, if any one plant like character, if any one plant like character is present in an organism, if any one plant like character is present in an organism, it is a plant. ठीक है. तो इसमें ये दो कैरेक्टर्स है प्लांट लाइक. सेल वॉल भी है, सीड्स एंड फ्रूट्स है. दैट्स व्हाई इट इज ए प्लांट. ऑल्दो इसमें जो न्यूट्रिशन है वो हेट्रोट्रॉफिक. तो व्हाई?
Why it is a plant? Because it has cell wall, it has seeds and fruits. Ma'am, send another student for question number 2. जल्दी से आ जाओ. पता है कि आप हाँ जी उठो हरमन सॉरी ये जसमीत गेट अप यू आर सिटिंग ऑन द फ्रंट तो आप वो आ जाओ बेटा, आ जाओ. देखो, organism X, it has root, stem and leaves. बेटा, this is plant like character की animal like? It is plant-like character. This is plant like character. Autotrophic, plant like की animal like? Plant-like. Plant like. But like plants, it does not have seeds and flowers. So it has two characters, plant like. Is it a plant or an animal? It is plant. It is plant because it is autotrophic, has root, stem and leaves. Very good. Better, better. So answer is, it is plant like. It is a plant as it has green leaves and perform photosynthesis. Okay. Then beta, चलिए नेक्स्ट हम एक और चीज देखते हैं. चलिए, write down an organism P. Write down, write down. It is non-green. Heterotrophic nutrition. Heterotrophic, you all know, obtain food from other organisms. It is a thread-like structure, no leaves. It bears seeds, flowers and fruits. It has cell wall and vacuole. Is it a plant? Ma'am, please send some student. आ जाओ बेटा, आ जाओ. बेटा, इसमें से कौन सा पॉइंट प्लांट लाइक है कोई कि नहीं है? Bear seed, flower and fruit. This is plant like character. Or Has cell wall and vacuole. it is a plant like character. Is it a plant? Yes. Yes, because although it is non-green and does not make its own food, but it has cell wall and vacuole, it has seeds, flowers and fruits, therefore it is a plant. Better, better, very good. So हम कहेंगे, although P is non-green, cannot prepare its own food, but ये ठीक कर लेना. But still is a plant because it has flowers, seeds and fruits, has cell wall and vacuole.
Okay. So it means even if everybody here, even if a plant is non-autotrophic, it is non-green, even then it can be a plant. An organism, if it is non-green, it obtains food from other organisms, it can be a plant. जरूरी नहीं कि वो हमेशा एनिमल होगा. अगर ग्रीन नहीं है, अपना खाना खुद नहीं बना रहा, तब भी वो प्लांट हो सकता है. किन कंडीशंस में प्लांट हो सकता है? अगर उसके पास सेल वॉल वैक्यूल है, अगर वो सीड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स बनाता है. इज इट ओके? Done? May we shift to another slide? Yes. Now, here, you must have studied, have you heard about Amarbel Cascuta? Yes or no? नहीं सुना आपने? अच्छा, मुझे अब हेलो. अच्छा, यस और नो बताओ. जिसने कस्क्यूटा के बारे में सुना है वो हाथ खड़ा करे. यस. ठीक है, तो अब हम बिल्कुल ठीक. सो वी आर टॉकिंग अबाउट कस्क्यूटा. लास्ट पॉइंट हम करेंगे कस्क्यूटा, also called as amarvale or आकाश बेल. आप देखेंगे कि वो ये जो है, ये होस्ट प्लांट है जिसके ऊपर ये रह रहा है. कस्क्यूटा क्या है? ये सिर्फ ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये जो दिख रहे हैं सिर्फ ये कस्क्यूटा है. ये कस्क्यूटा के पार्ट्स हैं. ये जो बाहर पत्ते दिख रहे हैं, लीव्स दिख रहे हैं, बाकी दिख रहा है जो, वो सब होस्ट प्लांट है जिसके ऊपर रह रहा है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी, ये नीचे जो है होस्ट प्लांट है, ये जो उसके ऊपर धागे से लटक रहे हैं, these are cascuta. These are the stem of cascuta, which is, आपको यहाँ पे ग्रीन, शायद इमेज में ग्रीन नजर आ रही है, but it is pale. Pale means yellow thread-like structure. So cascuta, no leaves, has thread-like yellow stem. It sends, ध्यान से सुनना है, it sends, इसकी रूट कहाँ है? It sends roots in the host. इसकी जमीन में रूट्स नहीं होती है. इट सेंड्स रूट्स इन द होस्ट प्लांट. किस लिए? टू एब्सॉर्ब फूड एंड वाटर. H2O is water from host. Therefore, Cascuta has sucking roots. सक कर रही है होस्ट में से, सकिंग रूट्स. और इसको होस्ट से टर्म आ गया हॉस्टोरिया. याद रह जाता है, बहुत अच्छा है. नहीं याद रहता, नो प्रॉब्लम, बट सकिंग रूट्स आपको पता होना चाहिए. दीज आर द फ्लावर्स. देखो ये थोड़ा सा मैग्नीफाई करके, ये देखो, ये कस्क्यूटा है, ये कस्क्यूटा, ये होस्ट प्लांट है, दूसरा प्लांट है जिसपे कस्क्यूटा रह रहा है. सो दीज आर फ्लावर्स. These are flowers of Cascuta. और ये आप देख रहे हो, आर यू एबल टू लिसन मी? Seeds and fruits of Cascuta. चलिए,
Write down this question. Cascutar Amar Bel. Write down. Is non-green, has no leaves, obtain food from other plants, but still a plant. Why? बेटे जरा बात करो मेरे साथ, क्या आप मुझे सुन रहे हो? Maths class. You should write. Good morning, all of you. How are you all? Seventh class, nice to see you all. Welcome to new class. Are you happy to come reach in seventh class? Yes. You're enjoying yourself all the subjects? Okay. Are you feeling कि कुछ नया पढ़ रहे हो अभी इस क्लास में? Raise your hand. Are you learning something new, different from sixth class? Maybe extension of sixth class, whatever you studied in sixth class, उसकी थोड़ी सी extension हो रही है, थोड़े और new related to those topics आप learn कर रहे हो. Is it so? Okay, good. Nice to see you all. Yes, beta, can you hear me? Put on video, please. Yes, seventh class, can you hear me? Okay. थोड़ी सी आवाज आती है अपनी, please put on video also, बेटा. Try करो. Yes. Now I can see you. Okay, look straight, all of you, beta. Okay. Can you see these all numbers on the board? Can you see in the box? There are so many numbers. Okay, fine. Very good. Can you tell me what kind of numbers are these? Suppose it is written here 1. What kind of number? 1 is what kind of number? Yes, beta, you want to tell me something? Boy who is standing? Okay. Who will tell me by standing?
अपने आप जिसको पता है खड़े होके बताओ, व्हाट काइंड ऑफ नंबर इज दिस? 1 के बारे में आप क्या बोल सकते हो कि ये कैसा नंबर है? ओके, this is a counting number. Few will say this is a natural number. Few will say this is a positive number. Is it so? ठीक है, आप इसको जो आपको नॉलेज, जिस चीज की आपको नॉलेज है, जो आपके माइंड में आ रहा है, आप इसको बोल सकते हो, राइट? You know one is a counting number. Raise your hand. Do you know? Counting numbers means whenever we have to count the things, we start by 1. Okay, 1, 2, 3, 4, and so on. So 1 is a counting number. And is it a positive number? Yes, this is a positive because there is no sign in front of it. When there is no sign, we say this is a positive number. Right? And whenever there is a negative sign in front of it, we say this is a negative number. Okay? And when there is 0 in between, 0 is also here. Can you see? 0 is what kind of number? Why we call it 0? Yeah, who is speaking? I want to hear from you. When do you use 0? Yes, खड़े होके बता दो. Very good. जो बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं फ्रंट पे, yes, जल्दी से बता दो. 0 कब यूज करते हो? Where it is used? Quickly. Very good. It is a neutral number. It is a neutral number. What do you mean by neutral? Which is in between the positive and negative numbers. Neutral number which has no sign. Okay, neutral बड़ा अच्छा आपने scientific word बोला है, ठीक है? In mathematics, how do you use? मैथ्स में यूज करते हैं न्यूट्रल वर्ड आप? मैथ्स में क्या यूज करते हो? जीरो के किसके लिए रिप्लेस करते हो? ओके, सिराम बेटा, गुड. You use 0 when there is nothing. Right? When your bag is empty, there are no books in your bag, you will say, I have 0 number of books. Okay? So 0 is also a number. Okay? Now you have to identify the positive integers, integers with no sign, and integers which are not whole numbers. Okay? One child, come forward. Anyone from boys? Anyone from boys? Very good. Okay, good, good, good. Who is willing to tell me the answer? They are coming forward themselves. Yes, very good. Can you tell me? I'm going to circle here. Please tell me what are the positive integers here? Where should I circle? Ma'am, 1. 1. Okay. Ma'am, 3. Good. Ma'am, 3. Ma'am, 5. 5. Very good. 8. 8. Very good. Now I can see many hands. Very good. Very good. I'll call 4. Very good. 0. 0 we will not call as 9. 0 9. has no sign. 2. 2. Very good. 7. 7. And 6. And 6. You see, these are positive integers. Very good. And can you tell me why we call them integers? आप इसको नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो क्या आप इसको होल नंबर भी बोल सकते हो? स्पेशली इसको इंटीजर क्यों बोला? Because of their signs. Because of their signs. Because of their signs.
Okay, very good. Sit down. Sit down. Any other child from boys? I want to hear from boys. Integer with no sign. Integer with no sign. Take care, we are talking about integers. We are not talking about whole numbers. We are not talking about special name. हम यहाँ पे बोल रहे हैं integers का. तो integers को please focus करो. अभी 7th onwards आप integers के बारे में पढ़ोगे ज़्यादा. Okay, I'll tell you why. Okay, from boys, who is coming to tell me integer with no sign? Quickly, very good, very good. Come out. Okay, from girls, no problem. Ma'am, the number which has no integer, that is 0. नो इंटीजर नहीं, इंटीजर तो है वो, बट साइन नहीं है उसका. इंटीजर Ma'am, विद 0. जीरो. इंटीजर विद नो साइन. ओके, वेरी गुड बेटा. Fine. वेट, इधर ही रुको अभी. वेट, कैन यू टेल मी द इंटीजर्स व्हिच नॉट होल नंबर्स? नॉट होल नंबर. Ma'am, what? Not whole number. Not whole Ma'am, number. What do you mean by that? ma'am, -6. Ma'am, -3. -3. Why? आपको ये गेस तो नहीं हो रहा? Ma'am, because they are in the negative. हाँ जी, बोलो बेटा. वेरी गुड. What is saying? Ma'am, because they are in negative and the negative numbers are not coming in whole number. Excellent. Very good. बिल्कुल perfectly आपने बताया. This is the number line. This is 0 here. This is 1, 2, 3, and so on. 0 onwards. These are all whole numbers. 0 onwards, सारे के सारे. Go to the left of 0. They are all negative numbers. Okay, these are all negative numbers. -1, 2, and so on. Okay, so all together, सारे के सारे number मिलके they are called as integers. Okay, so integers which are not whole numbers are other than 0 and positive numbers. Is it clear to everybody? Sit down, beta. Good. You spoke well. बिल्कुल ठीक बताया आपने. Your concept is very much clear that all the negative numbers, 0, and all the positive numbers together they come in integers. Okay, so these are all integers. These are all integers actually, but which are not whole number, they are negative ones. ये negative है, ये negative है. जितने भी आपको negatives दिख रहे हैं, they are integers but not all whole numbers. Okay, beta? That is fine. You have understood. One more thing, beta, I want to tell you. Few children must be having confusion about. Please listen to it carefully. Number line, everybody knows. You have read in lower classes. Okay. And it is infinite. There are infinite numbers. I want to tell you. Want, you can note it down also. Don't forget it. You are in 7th class now, and you will be using this thing many times. In 7th also, in other classes also. Okay, beta, you must know it. On the number line, there are infinite numbers that you know. Okay. From here, our whole numbers start, and from here, our natural numbers start. That you know. Raise your hand who know it. कि whole number 0 से start होते हैं और natural number 1 से start होते हैं. Please raise your hand who know. Very good. Very good. Okay. And these are all numbers. These all numbers from here to here. All negative. I cannot draw bracket here. I cannot draw bracket because there is no limit.
all the numbers on the left, all the numbers on the right, and in the middle, which is 0, are called integers. Right? तो सारे के सारे numbers क्या हैं? Integers. You can note it down. These are all important things. Okay? You know it. कोई आपसे पूछेगा तो बता पाओगे, लेकिन थोड़ा सा आपको डाउट होगा कि पता नहीं मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ. So please write it out to make it in the form of notes. All are integers. अब मुझे जल्दी से बता दो कि क्या सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर हैं? Who say yes, raise your hand. Who agree कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर हैं? Very good. Very good. Hands down. क्या सारे के सारे होल नंबर्स इंटीजर्स हैं? Raise your hand. All whole numbers are integers. Very good. Yes. Hands down. Hands down. Whether all the integers are whole numbers? If yes, raise your hand. All the integers are whole numbers? No. Very good. You have understood? Very well. ठीक है? ये छोटी सा ये नंबर लाइन सामने ड्रॉ कर लो. Then I'm going to change the slide. Okay, you must write it. 0 has no sign. 0 has no sign. These are all important things I'm telling you. Okay, you can write down here note at the top because you're writing regarding this chapter. Whatever important things you are going to note it down. So write down, this is first point about the number line. This is second point about that 0 has no sign. Okay, now I'm moving further. Jaldi se note down karo. Very good. Write it neatly so that you can see later. Nobody is going to check your notebook. Only you have to read yourself. Please write it neatly. I'll be telling you more points also about integers. Okay, अभी हमने सिर्फ number 1 and number 2 लिखा है यहाँ पे. We will be writing more also. Okay, better note. Please raise your hand. Have you noted? Shall I move further? Okay, good, good, good. Good, very good. एक दो बच्चे अभी लिख रहे हैं. I'm waiting for them. Okay. Let's move further, Vijay. See the next slide. Yeah. Please tell me why integers are important. Why you are expanding your numbers? छोटी क्लासेस में आपने 0 onwards पढ़े, 1 onwards पढ़े, फिर आपने 0 onwards पढ़े, फिर बीच में negative numbers आ गए. What is the importance of integers? Why we require these all negative also, 0 also, positive also? Why we require it? Can you tell me? जरूरत कहाँ पड़ती है इसकी? Just now you told me that positive numbers are there, negative numbers are there, then 0 is also there. है ना? You told me. इस टाइम भी सारे numbers होते हैं, they are all integers. What is the requirement of these all? Positive कहाँ पे use करते हो? When you add something. Yes, I can see hand. Last boy, beta, please come forward. Can you come? Last boy is raising his hand. Yes, any one of you. Aajo jaldi se. Very good. Where do you use in daily life? Addition, mode. Okay, where do you use it? At home, in school, with your friends. Where do you use this sign? I mean loss and profit. Loss and profit.
Okay. How do you use in loss and profit? And if there is profit, we use plus sign, and loss, and we minus sign. Very good. Very good. Okay. Where do you use zero then? Okay. Sit down now. Okay. You told me profit and loss. Can you write more about this? When you add something, you deposit something, you add more water in your glass. For these all things, you use more. You told me profit. Yes, profit. If you have 50 rupees in your pocket and your father gave you 50 rupees more, तो आपको तो profit हो गया ना? You gain more money. Yes. Very good, very good. Sit down, बेटा. Very good. बहुत अच्छा example दिया आपने. Right? Now, where do you use zero? Zero use करते हो zero word. Zero is a number actually. तो आप करते हो कि I can see one hand. Girls, please. हाँ जी आ जाओ बेटी. नीचे जो गर्ल्स बैठी हैं, शी इज रेजिंग अ हैंड. जल्दी से आ जाओ. आई वांट टू हियर फ्रॉम यू बिकॉज आपको तो एक्सपीरियंस है डेली लाइफ से. आप बता सकते सोच के. क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं. वो मैं भी करवाऊंगी आपको. आपके मैम ने भी करवाए हैं. बट यू शुड नो दिस वन. यस बेटा. Ma'am, zero is nor positive or nor negative, nor profit or nor debt. वेरी गुड. नीदर प्रॉफिट नॉट लॉस. ठीक है. मनी सेम ही है. ना तो मुझे मिला ना मैंने इसको किसी को दिया. तो ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ. ओके. एंड यू यूज इट फॉर नथिंग. When you use the word nothing or none, no child is absent today in the class. Zero child is absent. तो आपके मैम जो रजिस्टर में लिखेंगे, she will be writing absent students is equal to zero. Okay. Negative sign. Come to the negative now. These are all examples. Okay. Daily life में जो आप use करते हो. Negative, where do you use negative बेटा? For less. You have 10 books in your bag. Tomorrow your timetable is different. You will be taking out a few books from it. Okay. तो आपके बैग में अभी less books हो जाएंगी. Number of books will be less because your timetable is different. Right? What else? और कहाँ use करते हो negative को? Withdraw. Withdraw from the withdraw word use सुना हुआ है आपने? Withdraw from the bank. Withdrawing money from the bank. बैंक में मनी डिपॉजिट है तो वहां से आपने अगर विड्रॉ करवाने कुछ रुपीस निकलवाने हैं आपके पेरेंट्स ने तो दे विल विड्रॉ द मनी. और कहाँ यूज होता है बेटा? हाँ बता दो जल्दी से खड़े होके बता दो. वेरी गुड. अपने आप आ जाओ. फर्स्ट गर्ल नीचे जो बैठी हैं गर्ल्स बेटा. एनीवन जल्दी से बता दो. वी जस्ट डिस्कसिंग इट. ओके. डजंट मैटर. कोई भी उठ के आ जाओ. जब क्वेश्चंस पूछोगे then I will call the name. Yes. Loss. For Ma'am, loss. लॉस. ओके. लॉस हो गया तो इसका आपको जो है 20 रुपीज का लॉस हो गया. 20 रुपीज आपने एक्स्ट्रा शॉपकीपर को दे दिया. आपको लॉस हो गया. यस. सिट डाउन. व्हाट एल्स? यू नो कटिंग ऑफ लेंथ. कटिंग ऑफ लेंथ. कटिंग ऑफ रॉड. आपके पास एक लंबी सी रॉड है. लंबा सा आपके पास कोई थ्रेड है, रिबन है. उसको काटोगे. यू आर कटिंग इट. इट मीन्स यू आर मेकिंग इट लेस. Okay, so these are all general words जो आप daily life में use करते हैं. Okay, so that's why integers are used. Sometimes zero is required, sometimes positive is required, sometimes negative is required. So these all integers are very, very important in daily life. But this is not the end. There are so many more things. I'll be showing you how. There are so many more things where you use these all signs. We'll continue next time, beta. Okay. Please remember till here and revise your all work what you did in class. Next time we'll be starting with module also.
Okay, come prepared then. Chalo, see you next time. Bye bye.